Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 58 for that topic body fluids and circulation. After learning in detail the composition of blood with respect to all that types and subtypes of the white blood cells and their functioning, now we have to learn another equally important article, that is blood groups in the human being. Okay, from time to time different blood groups have been given, different systems have been given, but two systems are now widely used all over the world. One is known as the ABO blood group system, other is known as the RH. So generally in practice you say, what is your blood group? I will say that my blood group is B plus, and if you will watch it on the paper there, prescription etc., you will find that that is given BRH plus. That means I belong to the blood group B and the RH blood group is RH positive. RH, some may have RH negative. Okay, so how that system is created there, how that system is given there, that all we have to learn in this lecture. A very simple thing. And you might have learned earlier in your 10th standard also, but just get revised properly. All that system you should understand very clearly. It was first given by German physiologists. Which system there? ABO blood grouping. That was given first by a German physiologist, Karl Landsteiner. You might have heard the name earlier, Landsteiner, in 1900. And he was awarded a Nobel Prize for this very important work that was given in 1924. So Nobel Prize winner Landsteiner had given this ABO blood group system. Okay, then this is based on presence or absence of two surface antigens present on RBCs. We know that RBCs, red blood cells, are present on very large scale in the blood. So on the surface of that, there are present some specific antigens. They are called the surface antigens. Some may have A, some may have B, some may have no antigen. Some persons I am saying. And whatever the thing in one RBC is there, that will be there in all RBCs, because that is genetically controlled. Okay. That means it is not the case that if few RBCs are having antigen A, few are having antigen B, that is not the case that. Whatever the system is decided, that will be there throughout that life in that person. That is very astonishing. And that antigens have been labeled as antigen A and antigen B by Landsteiner. Okay. They are named as A and B. Now what is antigen? In immune system you must have studied this word. Antigen is that substance, that chemical substance which can trigger, which can induce immune response. Which can induce immune response. Okay. उसे कहेंगे एंटीजीन. That you know that our body has got immunity system, disease resistance capacity जिसको हम कहते हैं. तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ आता है फॉरेन पार्टिकल, जर्म पार्टिकल, दैट अगेंस्ट दैट सस्पिशियस अगर है, समझो बैक्टीरिया है, वायरल पार्टिकल है, सम केमिकल है which the body cannot recognize easily, then that is considered by that WBC lymphocytes etc. as the antigen. उसे डिटेक्ट किया जाता है एंटीजीन नाम से, उसे हम एंटीजीन कहते हैं. And then immune system starts to work to neutralize that chemical. It produces another
equal and opposite action containing chemical there, and that is called the antibody. So in response to the antigen, antibody are produced. They are produced by immune system in response to the एंटीजीन. और यह एंटीजीन एंटीबॉडी का वॉर रहता है, केमिकल वॉर. अब आजकल कोविड के जमाने में, जब से कोविड के आर्टिकल्स आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा that whatever the viral particle is entering in our body, that is producing some chemicals there, that is called as the antigen. तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं. Okay, and once that antibodies are formed, and if they are capable to destroy that antigen, then our body gets protected. After all, ये war है. Mostly our antibodies conquer और वो एंटीजन को खत्म कर देते हैं, तो हम डिसीज फ्री हो जाते हैं. हमें डिसीज नहीं होता, हमें कुछ हार्म नहीं होता है. ओके, बट सपोज that antigen is not getting destroyed by the antibody produced by our body, then we may suffer. तो फिर हमें कुछ उसका हार्म हो सकता है, डिसीज हो सकता है. So that all you know, you have to learn in that immunity system also. So here antigens are there present on RBCs, A, B or nothing. और ये जेनेटिकली कंट्रोल है कौन से एंटीजन आने वाले. एंड प्लाज्मा हैज टू डिफरेंट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, टू इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट. उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज जो है वो भी ध्यान में लेने वाले. एंटीबॉडी ए टू डिस्ट्रॉय द एंटीजीन ए एंड एंटीबॉडी बी टू डिस्ट्रॉय द एंटीजीन बी. एंटीजीन ए को डिस्ट्रॉय जो कर रहा है वो है एंटीबॉडी ए, और जो बी को डिस्ट्रॉय करेगा वो है एंटीबॉडी बी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर पॉसिबल इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 ग्रुप्स अभी बन सकते हैं. कौन से 4 ग्रुप्स बनते हैं? देखो, that particularly A blood group is that which has got antigen A, जिसको एंटीजन A है on RBC. ओके, और जिसको एंटीबॉडी प्लाज्मा में जो होती है that is एंटीबॉडी B. आप कहेंगे ऐसा कैसा हो गया? How it is possible? अगर एंटीजीन ए है तो एंटीबॉडी भी ए चाहिए. योर डाउट मे बी क्लियर, मे बी परफेक्ट, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से, अगर एंटीबॉडी ए होगा तो ये खत्म हो जाएगा ना. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंटीजीन शुड रिमेन देयर, एंड दैट्स व्हाई एंटीबॉडी इज एंटीबॉडी बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. ओके, देन अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसे एंटीजन कौन सी है? बी. और एंटीबॉडी कौन सी हो सकती है? दैट इज ए. एंटीबॉडी विल बी ए. व्हेन बी एंटीजन इज देयर, इट इज एंटीजन बी, एंड द एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा विल बी एंटीबॉडी ए. अब ए बी भी मालूम होता है, कई पर्सन्स का ब्लड ग्रुप ए बी होता है. तो ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब क्या है? देखो, ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब ऐसा है दैट बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट देयर ऑन आरबीसीज ए एंड बी. और यहां पर भी एक ही आरबीसी को दोनों एंटीजेंस है, ए एंड बी, वो अलग अलग नहीं है. इजंट इट? यानी कुछ आरबीसी पे ए है, कुछ आरबीसी पे बी है, वैसा नहीं है. That they are having, all RBCs are having A and B antigens. So that's why the blood group is called as AB. और यहाँ पे नील antibodies will be there. Obvious.
If plasma would contain antibody A or antibody B, both that RBCs would have been destroyed because the antigen would have been destroyed. Isn't it? So that's why antibody will be nil. And O blood group is that where no antibody nil and antigen, and here antibody A and antibody B both will be present. Okay? So very clear understanding should be there. When no antigen is there, it is called as actually zero. पर ब्लड ग्रुप को जीरो कैसा कहेंगे तो उसे ओ प्रोनाउंस किया जाता है. क्या है? जीरो और ओ सेम दिखता है. Isn't it? So that may be pronounced as O. Zero antigen actually है वो. Okay, and that is genetically decided. दो क्रोमोसोम्स है और ये दोनों भी क्रोमोसोम पे अगर IA if IA is there और एक क्रोमोसोम पे IA और दूसरे पे I0 जीन है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? दैट विल बी ब्लड ग्रुप A. सपोज दोनों में IB है और या एक में IB है एक में कोई भी नहीं है, देन दैट ब्लड ग्रुप विल बी B. और इसमें अगर दोनों में कोई भी नहीं है, I0 तो ये क्या बोलेगा? दिस विल बी O ब्लड ग्रुप. और दोनों में एक में IA है एक में IB है, देन दिस विल बी AB ब्लड ग्रुप. कोडोमिनेंट जीन्स है that A and B are called as codominant genes. तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है. ये मैंने क्यों दिया है आपको? क्योंकि अगर क्रॉसिंग में कभी पूछा गया, ए फादर हैज जीनोटाइप IA and mother has genotype IO, then what is the possibility of the products? तो वो आप करके देखो एक बार होमवर्क में. So I am confident that you have understood this very simple concept. So do like and share this video to your friend circle. In the next video, we are going to learn regarding the compatibility of these blood groups and also the RH blood grouping. Okay? Thanks a lot.